So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So we will be starting up this session very soon. Okay, so just give me 1 minute so that I can do the technical testing. So the session is about to start. Okay, so अभी जो है session आपका start होने वाला है 1 मिनट के अंदर अंदर. Okay, so just wait for 1 minute. We will be starting up this session and let me first check whether we are live and connected or not. Okay, so that we can have uninterrupted session. Other than that, I have already told you that the PDF for today's The Hindu analysis has already been uploaded in our Telegram page. Okay, so it will be better if you first download that PDF, and along with the session you can refer to that PDF. Okay, Subhash, good morning. Ananya, good morning. Okay, so PDF already available है. Go to our Telegram page, download the PDF so that आप साथ साथ खुद ब खुद रिवाइज कर सकें. Okay, यशवनी सत श्री अकाल सर. Okay, so that you can revise it while I will be narrating the session. Okay, Gurleen, good morning. So we will be starting it. So without wasting much time, let's start the session. Okay, let's start the session. Let's see what exactly is there for us in today's session. Satpal Singh, good morning. So let's see what exactly is there for us. Okay, so massive gathering in Haryana demands repeal of farm laws. Things are not settling down. चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं. ओके, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. वी हैव टू स्टिल विच वेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करता है. गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग. ओके, नाउ इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. वी विल टेक अप दिस पर्टिकुलर issue. Okay, so I'll cover this in detail. This will be done in your detail because this is related to your internal security. Okay, internal security and how social media can be misused. Okay, सोशल मीडिया कैन बी मिसयूज बिकॉज फार्मर्स के साथ कोई जेनोसाइड यहाँ पे नहीं हुआ है. इन इंडिया वी कोई ऐसा जेनोसाइड नहीं हुआ है, बट वहाँ पे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हो रहा था. इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड. ओके, एंड इट रिड्यूसेस द ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. ओके, आप वहाँ पे जो है ट्रस्ट डेफिसिट को और बढ़ा सकते हो. सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग. ओके, दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो लेट्स मूव अहेड. ओके, देखते हैं नीचे क्या है. बिहार गवर्नमेंट वोंट हायर प्रोटेस्टर्स. ओके, नाउ द गवर्नमेंट हैज इश्यूज सम डायरेक्शन. ओके, दैट दोज हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट फार्म लॉज they will not hire them. Okay, उनको नौकरी नहीं मिलेगी. Now this goes against the right to have employment. Okay, and your right to protest. Okay, so government is using different measures to curb the civil liberties. Okay, so आपका protest जो है वो आपका democratic right है. Okay, तो government उसको इस तरीके से हटा नहीं सकती, but they are trying to do that. Okay, वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं. Other than that, there is nothing much on this particular page. Let's move to our detailed editorial section. Okay, editorial section देखते हैं क्या है वहाँ पे. So weighing on the Biden's presidency, we are going to cover up this editorial. Okay, because what Biden is going to do, it is going to have an impact on us. हमारे ऊपर उसका impact definitely रहेगा. Okay, what will be the US policy in West Asia? West Asia के अंदर क्या उनकी policy होगी. So international relations से related है and it is important for us. Okay, from our exam point of view. Other than that, no to vaccine nationalism, yes to global cooperation. Okay, and India is playing a remarkable role that we are not you know uh, keeping vaccine only to us. Okay, we are allowing it to get exported to other countries. Okay, now Brazil also got vaccine for us from us. Okay, Indian neighbors, they also got vaccine from us. So this is a remarkable example of smart diplomacy, you can say. Okay, smart diplomacy. Okay, उसका एक बहुत अच्छा example है that we have the technology and we are sharing it with other countries. Okay, we have the technology to manufacture vaccine and we are sharing it with अदर कंट्रीज. ओके, तो हम बाकियों को भी जो है शेयर कर रहे हैं. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ. ओके, सो टुवर्ड्स द सस्टेनेबल ग्रोथ. नाउ शिफ्टिंग स्टैंड एंड ओवेसी फैक्ट वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट. दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग. ओके, टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ वी विल बी कवरिंग अप दिस थिंग कि क्या ये बोल रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ को लेके. बिकॉज COVID has done away with our effort. Okay, whatever effort we had made so far, the humanity to remove poverty, वो वापस जो है डाउनग्रेड हो गया होगा, नीचे चला गया होगा. ओके, डेफिनेटली लोग पॉवर्टी भी बढ़ने वाली है. नाउ स्मार्ट वॉल फॉर इंडियन बॉर्डर्स. सो आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड 2 मेंस क्वेश्चन. ओके, वन from your mains 2019. So border management पे there was one question and there was one essay also
on border management in your mains 2019. Okay, ऐसे भी था, and there was one question in your GS paper 3 in mains 2019 also, and in 2020 also there was one question. Okay, so border management पे दो क्वेश्चन जो है एक तरीके से आए थे. सो ये हम कवर करेंगे. विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस, थोड़ा देखेंगे क्या है वहाँ पे. ओके, सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच इम्पोर्टेंट फॉर आर यूपीएससी. हमारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है. इफ समवन इज हैविंग इंटरेस्ट इन रीडिंग अबाउट द डिफेंस, ओके, डेफिनेटली ये वो रीड कर सकते हैं. ओके, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है. सीडीएस एग्जाम से जो है आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो इफ यू आर अपेयरिंग इन योर सीडीएस एग्जाम. ओके, सो दिस इज अगेन अ पॉलिटिकल पेज, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, कुछ खास यहाँ पे नहीं आता है. Okay, now you have to understand this thing, no internet yet at Delhi borders. Okay, now internet is certainly very important in the present time. Okay, and is, you can say, it is part of your civil liberty. Internet, access to internet is a part of your civil liberty, but the government is not allowing it. Okay, तो ये नुकसान होता है. So it was important that internet ban is not a new thing in India, और काफी नुकसान भी होता है हमें. कश्मीर के अंदर जो है लगता है इंटरनेट बैन बहुत बार. Okay, Sri Lanka's ECT move unilateral. Japan is angry over it. Okay, earlier it was decided that India, Japan and Sri Lanka, they will together develop the Colombo port. Now the Sri Lankan government is saying that okay, no, we won't allow. ठीक है, वो अलाउ नहीं करेंगे इंडिया और जापान की पार्टनरशिप को यहाँ पे काम करने के लिए. ओके, सो कलेक्शन ऑफ डीएनए सैंपल्स विल लीड टू मिसयूज. गवर्नमेंट वाज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग वन लॉ. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट, उस कानून के ऊपर जो है ये बात है. एंड जस्टिस मदन लॉकर ही सेइंग दैट ये ठीक नहीं होगा. ओके, सो विल लुक इनटू इट, देखेंगे इसके अंदर क्या इन्होंने बोला है. एंड अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, विल मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ. एंड ओके, सो मूव टू दिस वन. एंड again nothing much important for us. Okay, we'll cover up this thing. Iran's Rahuni rules out the change to nuclear deal. Okay, इसको जो है देखेंगे क्या इन्होंने बोला है. US extends new start nuclear treaty with Russia. Okay, we'll cover up this thing also. इसको भी थोड़ा कवर करेंगे क्या है. Okay, डिटेल के अंदर. So other than that there is nothing much, कुछ खास यहाँ पे नहीं है. और let's move to this one. So small tax disputes accounts for substantial pendency. Okay, we'll look into it what he is saying, कि देखते हैं क्या कह रहे हैं. ठीक है ना, तो कुछ हमें जानकारी मिलेगी. टैक्स डिस्प्यूट इज अ बिग प्रॉब्लम. ओके, एंड मल्टीपल यू कैन से इकोनॉमिक सर्वेज हैव मेंशन्ड अबाउट इट. ओके, बहुत से इकोनॉमिक सर्वेज ने बोला है. सो विल कवर इट. ओके, इसको देखते हैं. सो लेट्स मूव टू आवर डिटेल डिस्कशन सेशन नाउ. ओके, थोड़ा डिटेल डिस्कशन में जाते हैं तो पता लगेगा कि क्या है हमारे पास. ओके, सो यहाँ से हम लोग डिटेल डिस्कशन में जाएंगे. ओके, सो विल सी. लेट मी एड्रेस यू. ओके, यशवनी सर, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रशिया ने भी बनाई है, फिर किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप में बनाई है रशिया ने. नो, स्पुतनिक 5 इंडिया में शायद अभी मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाएगी. ओके, सो दे आर रेडी टू शेयर दैट टेक्नोलॉजी विद अस. वी आर एबल टू प्रोड्यूस इट. ओके, हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो इसलिए वो रेडी हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग. तो गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिस टू ट्विटर टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू फार्मर जेनोसाइड. ओके, now this is a very dangerous thing. Why so? Because it can have adverse effect on public order. Okay, public order के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. And that's why government has to act to remove the spread of misinformation. इस टाइप की जो inflammatory information है, you have to remove it. Okay, the ideal thing will be that social media platform. Okay, so social media platform, they should be सेल्फ रेगुलेटिंग देमसेल्फ. अपने आप को खुद जो है वो रेगुलेट करें. ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बट ऐसा होता नहीं है. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स. नाउ दिस इज व्हाट वाज ट्रेंडिंग, फार्मर्स जेनोसाइड. क्या फार्मर जेनोसाइड यहाँ पे हुआ है इंडिया के अंदर? ओके, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फार्मर जेनोसाइड. So but this was trending. So this is further going to increase the mistrust between farmers and गवर्नमेंट. ओके, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में फिर दोबारा जो है ये मिसट्रस्ट को दोबारा जो है बढ़ा देगा. एंड दिस इज नॉट गुड. ओके, ये सही नहीं है, नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी. एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिवेंट दिस डैमेज. इस डैमेज को प्रिवेंट करना है एंड गवर्नमेंट डिड दैट. ओके, अदर देन दैट जस्टिस मदन लॉकर मेक्स अ रिटन सबमिशन टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी
okay, on science and technology. So this bill was proposed, DNA Technology Regulation Bill 2019. Okay, so in that the investigating agency has to collect DNA samples from the suspects. So now justice is saying there is a problem in this. Okay, what is the problem? It is giving the unbridled power that can be easily misused, okay, and abused. So you never know, government may ask you to give your DNA sample, and then that information can be shared with multiple companies, okay, and it can be misused also. So it's a threat to the life, liberty, dignity and privacy of a person, okay. हर जगह जो है ये आपका एक तरीके से वायलेशन करेगा, आपकी health related information can be shared, okay, your family related information can be shared, then it's a problematic thing. ऐसे जो है DNA sampling ठीक नहीं है, okay. So DNA testing is currently being done on an extremely limited scale in India. Approximately 30 to 40 DNA experts इतनी लैब में काम कर रहे हैं, okay, and there are few cases, 3000 cases, okay. Now you have to understand this thing. Whatever thing we have, whatever arrangement we have, the standards of laboratories are not monitored or regulated, okay. The DNA sampling is still going on in this country, but the problem is that they are not monitored, okay. Monitoring वहां पे अभी भी नहीं है. So that's why this bill aims to introduce the regulation of the entire process from collection to storage, okay. So everything is fine in this, okay. अगर जो है collection से storage तक सब कुछ ही बताएगा, बहुत अच्छी चीज है. The preamble of the bill says that it aims to provide the regulation for the use and application of DNA technology, okay. कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो. फॉर अप्लाइंग सर्टेन कैटेगरीज, आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए पर्सन की, इंक्लूडिंग द विक्टिम्स, ऑफेंडर्स, सस्पेक्ट्स, ओके, इन सब चीजों को. ना प्रॉब्लम इज विद द वर्ड सस्पेक्ट. सस्पेक्ट को लेके यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम बताई है. सो ही सेइंग दैट suspect can be anyone, okay, suspect can be anyone. There are endless people, large number of people can be considered as suspect and they will be forced to give their DNA sample. उनको force किया जाएगा कि वो अपना DNA sample दें, okay. So it means that how, just give me 1 minute, okay, so that we can have uninterrupted session, okay. Just give me 1 minute so that we can have uninterrupted session. Okay, so I guess we are live back now, okay. I guess we are live, okay. So just wait for 1 minute, okay. Just wait for 1 minute. I guess we are connected now again, okay. So that we can continue this session. So yes, we are back, okay, fine. Okay, fine, let's continue it, okay. There was a power failure, now I have reconnected it, okay. So you can easily understand, like, such an unbridled power is given to the government, okay, that they can collect your DNA samples and they can store it, okay. And this is the police power, so it may amount to life threat to your life, liberty, dignity and privacy of a person. तो इन सब चीजों को ये डेफिनेटली जो है नुकसान पहुंचा सकता है आपकी लाइफ को, आपकी लिबर्टी को, आपकी डिग्निटी को और आपकी प्राइवेसी को. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, ओके. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. थिंक अबाउट अ कॉल्ड सस्पेक्ट. सस्पेक्ट क्या होता है? एनीवन कैन बी अ सस्पेक्ट. किसी को भी आप सस्पेक्ट बना सकते हो, ओके. इट मींस endless number of people can be, taken as suspect and they will be forced to give their DNA sample. उनको डीएनए सैंपल अपना देना पड़ेगा. देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ओके, एंड इट विल बी मिसयूज्ड एंड यू कैन टारगेट सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, ओके. विद दिस आप जो है किसी सर्टेन टारगेट, किसी कैटेगरी को टारगेट भी कर सकते हो, ओके. किसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हो एंड इट में फर्दर इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट. जो डिस्ट्रस्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको फिर दोबारा वो बढ़ा देगा. So this is the problematic thing, okay. Now the committee observed that it does not negate the need for such legislation, okay. Now that doesn't mean that we do not need such law, okay. So DNA technology को regulate करने के लिए definitely you need a law, वो आना चाहिए, okay. But that should be very fool proof, okay. बहुत ही powerful और fool proof होना चाहिए so that the misuse can be avoided. और मिसयूज को आपको रोकना पड़ेगा, ओके. इस टाइप की चीज आपको लेके आनी पड़ेगी. सो लेट्स मूव अहेड. No clause of JCPOA will change. President Hassan Rouhani on Wednesday ruled out the changes to Iran nuclear accord, okay. Now JCPOA, joint comprehensive plan of action, this was an agreement, okay, signed between Iran
एंड P5+1 कंट्रीज और ईरान के बीच में साइन हुआ था. अंडर दिस ईरान वाज सपोज टू एंड इट्स न्यूक्लियर प्लांट. ओके, जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था ईरान वाज सपोज टू एंड इट. एंड उसके एवज में जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर वो हटने थे. नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन केम और उन्होंने जो है एक तरीके से इस ट्रीटी से बैकआउट कर लिया था. नाउ द आइडिया इज दैट Biden administration is back, okay, and Biden was the vice president at that time. Obama administration के अंडर ये JCPOA was signed, okay. So it is very likely that they may revive this. And Joe Biden, they have voiced support for returning to the accord, okay. Trump ने exit कर लिया था. Biden is saying that we are going to return to this accord, okay. Now over the time Iran has already enriched the uranium, okay. यूरेनियम को लेके ईरान ने enrichment अपना कर लिया है, okay. Now few experts were saying that थोड़ा और जो है प्रेशर ईरान के ऊपर डालना पड़ेगा and the ambit of the treaty can be increased, okay, but Iran is not ready for it. So ईरान अभी इसके लिए तैयार नहीं है. There are experts who are saying that the ambit of the treaty can be increased and bring in Saudi Arabia को भी साथ ले आओ इस पीस ट्रीटी में. एंड ईरान एंड सऊदी अरेबिया दे विल नेवर बी रेडी टू कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ओके. दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग. नाउ यूएस extends new start nuclear treaty with Russia, okay. Now Biden, okay, he is saying that he is extended new start nuclear treaty with Russia by 5 years, okay, and it may hope to prevent an arm race despite rising tension with Moscow, okay. Now this treaty was signed between US and Russia. The idea was that they will be able to कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ओके. न्यूक्लियर वेपन की जो प्रोलिफरेशन थी उसको रोका जा सकेगा, जो आर्म्स रेस चल रही थी उसको रोका जा सकेगा, ओके. सो विद एक्सटेंडिंग न्यू स्टार्ट बाय मैक्सिमम अलाउइंग टाइम ऑफ 5 years, ये उन्होंने एक्सटेंड किया है. सो द ट्रीटी साइंड बाय देन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा इन 2010, ओके. अब ये 2026 तक जो है ये ट्रीटी चलेगी. द लास्ट रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पैक्ट बिटवीन फॉर्मर कोल्ड वॉर राइवल्स, ओके, ये था कि दे विल कैप द नंबर 1550 नंबर ऑफ वॉर हेड्स, ओके. ये कैप जो है उन्होंने एक तरीके से लागू की है. सो वी हैव टू स्टिल वेट इसके ऊपर प्रॉब्लम आगे कैसे चलती है आगे. नाउ एक्सपर्ट्स वर सेइंग दैट चाइना को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लो, ओके. दैट expand this to cover China should also be covered here, okay. Why are you confining it to only Russia? China को भी लेके आओ जाओ, China भी proliferate कर रहा है, okay. So it will reduce the danger from China's modern and growing nuclear arsenal, but Chinese might not be ready for it, okay. This is the reality. Chinese इसके लिए ready नहीं होंगे, okay. So let's move to next now. So you have assumed a significantly higher tax buoyancy for the corporate income tax, okay. तो ये उम्मीद है गवर्नमेंट को कि जो टैक्स बॉयंसी है हमारी बढ़ जाएगी, टैक्स बेस हमारा बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा, ओके. So they are saying that we are working on ease of compliance. Now government is going for faceless, okay, faceless tax administration. हम लोग जो है faceless tax admin की तरफ बढ़ रहे हैं. Government is moving towards it and it's a good thing, okay. हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं and it will bring certainty to the tax culture. वो अच्छा होगा and टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोसेसेस जो है हमारी वो भी यहाँ पे बेहतर होंगी, ओके, ओवर द ईयर. एंड देयर आर हाई चांसेस दैट कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो गए, ओके. सो इट शुड क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट द टैक्स लायबिलिटी गेट्स डिस्चार्ज by each individual, corporate and entity in a correct and proper manner, okay. That now you are not going to harass corporates. आप किसी corporate को harass नहीं करोगे, okay. The synergy in exchange of information between different arms, ये synergy आएगी. different government की arms हैं, अलग अलग departments हैं, there will be synergy between them, okay, so that the compliance can be in a better way, assured in a better way, okay. So you are trying to create an atmosphere for voluntary compliance. We are working on it, okay. voluntary compliance को आपको आगे लेके जाना है and this should bring in the buoyancy. इससे जो है हमारी टैक्स के अंदर कलेक्शन जो है वो बढ़ेगी, okay. Now टैक्स buoyancy की अगर हम बात करें तो वो बोलेंगे कि इंक्रीज इन टैक्स टू इंक्रीज इन जीडीपी रेशियो, ओके. इसके तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीज इन टैक्स टू इंक्रीज इन जीडीपी रेशियो. इसको टैक्स बुओयंसी बोलते हैं, ओके. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ दे आर सेइंग दैट रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट टू 3 years फ्रॉम 6 phase a challenge, okay. This question has been asked. So they are saying that okay, you have to remove the fear from the taxpayer, okay. टैक्स पेयर को जो फियर है, जो डर होता है, दैट यू हैव टू रिमूव, ओके. तो उसके लिए ये बात की गई है. एंड
टैक्स इवेजन को डेफिनेटली यू हैव टू स्टॉप इट, आपको टैक्स इवेजन को रोकना भी है, और इसलिए जो है सिचुएशन और प्रोसेस जो है थोड़ी स्ट्रीमलाइन की गई है. नाउ द मेन आइडिया इज दिस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी. ओके, टैक्स रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक सर्वे 2017 इज सेइंग दैट वी आर फेमस, इंडियंस आर फेमस फॉर टैक्स टेररिज्म. हमारे यहाँ पे टैक्स टेररिज्म है. ओके, कॉर्पोरेट्स को बार बार हरास किया जाता है. सो इकोनॉमिक सर्वे 2017 में ये बताया गया था. नाउ गवर्नमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स फेसलेस मैकेनिज्म, ताकि हरासमेंट ना हो, एंड दिस फेसलेस इज अ न्यू नॉर्मल थिंग. ओके, द होल आइडिया इज टू मेक द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर ईजी, दैट दे कैन कंप्लाई विद द प्रोसेस वेरी इजीली. वो अपना टैक्स फाइल कर सकें, जितना सिंपल हो सके उतना कर सकें, एंड वॉलंटरी कंप्लायंस यू हैव टू प्रमोट. ओके, कोर्शन किसी को नहीं करना, प्यार से जो है मनाना है, ये बात इन्होंने बोली है. नाउ वी हैव अ समथिंग कॉल्ड टैक्स रेजोल्यूशन स्कीम, विवाद से विश्वास. ओके, विवाद से विश्वास. विवाद मीन्स earlier they used to fight with each other, now they are working on cooperating with each other. Okay, so it has been a great success, and near about बहुत जो है 1.32 लाख disputes, okay, वो रिजोल्व किए हैं 95,000 करोड़ के अराउंड के. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रिमार्केबल थिंग. ओके, ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग टैक्स डिस्प्यूट्स को ऐसे ठीक कर रहे हैं. सो सीनियर सिटीजन नॉर्मली हैज पेंशन. ओके, वो पेंशन होती है, इसलिए उनकी जो टीडीआर फाइलिंग को लेके थोड़ा बहुत प्रोविजन उनको दिया गया है, थोड़ा ईज आउट किया गया है उनके लिए. ओके, सो ये बात इन्होंने यहाँ बताई है. सो लेट्स मूव टू आवर एडिटोरियल सेक्शन नाउ. ओके, एडिटोरियल सेक्शन में देखते हैं. सो व्हेन while it could be a curate egg for New Delhi for the world, a return of Obama era policies may prove inadequate. Okay, now he is saying that if even if US turn around the policies, okay, even if US turn around its policies, that Obama era is unlikely to come. Okay, Obama era वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी वाटर जो है वो काफी आगे बह चुका है, पानी बहुत बह चुका है. ओके, ऐसा ये बोल रहे हैं. So celebration of democracy, definitely Biden is back now. Okay, and he has delivered a message कि अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं दे विल बी अपहेल्ड. द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कमिटेड टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एंड ही इज ट्रेंडिंग टू बी आइडियलिस्टिक प्रेसिडेंट. ऐसा ये बनेंगे. ओके, सो ये बात अब सामने आई है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ही इज फर्दर सेइंग दैट ही विल रीस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ अमेरिकाज डेमोक्रेसी. ओके, ये बात इन्होंने बोली है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी को जो है प्रेस्टीज को ये वापस लेके आएंगे, बिकॉज अंडर ओबामा, अंडर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस्टीज को काफी नुकसान हुआ है. रिसेंटली देयर वाज वायलेंस. ओके, सो he has also proposed 1.9 trillion dollar relief package, which is really good, which will help in removing unemployment. Okay, unemployment को हटाने में help करेगा. minimum wage को raise किया जाएगा, वहां पे ये help करेगा. So policy reset and China. So new president would even soon come to realize that the global environment today is very different from one that he knew as a vice president. Okay, now this is the new reality that he is not living in an old world. Okay, दुनिया जो है बहुत बदल चुकी है. So under President Biden, one can expect US to reduce the militarization of फॉरेन पॉलिसी. ओके, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी था. दे वर वेरी असर्टिव, वेरी एग्रेसिव. दिस माइट फर्दर मूव डाउन. बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये थोड़ा डाउन हो जाए, एंड दे विल माइट मूव टू द ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी. ओके, जो पहले डिप्लोमेसी के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो वापस वहां चले जाएं. Okay, so contentious foreign policy issues could well open up as a result, incorporating elements of both competition and cooperation. Okay, so you have to understand this thing. In your foreign policy, the competition and cooperation both are important. Okay, and it was said that powers like, suppose US and China, they are competing with each other, but they need to cooperate with each other also on issues like climate change. India and China, we are competing with each other, but we have to cooperate with each other on issues like climate change. Okay, so competition and cooperation should go side by side. Okay, and rising China is not merely a single most serious challenge US जो face करेगा. There are lot of things जो उनको face करनी है. Okay, technological threat है, economic threat है, diplomatic जो है challenges हैं यहाँ पे. Okay, and China is definitely a threat. Okay, because it is disturbing the security architecture of the world. Okay, security architecture को थोड़ा China impact कर रहा है. And whether the US should persist with the confrontation. Okay, now the question is that whether the US should persist with confrontation. Okay, so it would require US to soft pedal its antagonist posture towards China. Okay, so शायद वो थोड़े soft हो जाएं चाइना के ऊपर, ऐसी उम्मीद है. ठीक है ना.
सो डेप्थ ऑफ एंटेगनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज यूएस एंड रशिया, ये तो वैसे की वैसे रहने वाली है, ओके। इट माइट फर्दर इंक्रीज, एग्रोवेट भी हो सकती है, बिकॉज रशिया इज अ ट्रेडिशनल एनिमी ऑफ यूएस, ओके, ऐसा बोला जाता है। एंड अदर देन दैट रशिया और चाइना के साथ जो है रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, सो दिस माइट नॉट बी इन द, यू कैन से, in favor of US. Okay, so US relation with Russia continuing to remain cold, but as Russia flexes its muscles in Eurasia, okay, US will need to come up with new policy directive. Okay, if the Russians are assertive in Eurasian region, तो वहाँ पे US को definitely नई policy लेके आनी पड़ेगी. Okay, so if you talk about Europe and West Asia, so it's an uphill task. Okay, क्योंकि ट्रम्प ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है वो काफी जो है खराब कर दिए थे, स्पेशली विद द नेटो कंट्रीज, ओके। एंड यूरोप इज नो लॉन्गर लाइकली टू गिव इट टू द यूएस डिक्टेट्स, अब वो यूएस की बात शायद इतनी नहीं सुनेंगे। एंड जर्मनी इज पॉसिबली एमर्जिंग एज अ यूरोप्स न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, और जर्मनी एमर्ज कर रहा है। एंड जर्मनी बीइंग वाइल हाईली क्रिटिकल ऑफ रशियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, ओके, और उसको लेके भी उन्होंने बहुत बातें बोली हैं। एंड बट इट इज अनलाइकली दैट दे मे टेक द स्ट्रिक्ट स्टांस, ओके, ये शायद स्ट्रिक्ट स्टांस जो है रशियंस के अगेंस्ट ना लें, जर्मन्स की अगर हम बात करें, ओके। अदर देन दैट इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, सो अगेन यूएस ऑब्जेक्शन जो है इस बारे में ना सुने जाएं, ओके। सो इट इज अबाउट यूरोप्स न्यू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग द सजेशंस फ्रॉम यूएस, यूएस के सजेशन को ये शायद नहीं इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे, ओके। सो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग वार्निंग टू ग्लोबल लीडर्स एट द वर्चुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस, ओके, उन्होंने बोला था कि दे आर वार्निंग दैट इट इज अ स्टार्ट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर, ओके। सो दे आर वार्निंग द वर्ल्ड दैट क्या पता न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए बिटवीन द यूएस एंड China. Okay, what about the old Cold War? Old Cold War was between USSR and US. Okay, now they are saying that it might be a new Cold War between US and China. तो उसको अवॉइड करने की बात इन्होंने बोली है, ओके। सो सिविल वॉर जो है ये सीरिया यमन में चल रहे हैं वो अभी तक एंड नहीं हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द पॉलिटिकल सेटलमेंट, ओके, विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड, पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है इतना आसान नहीं है। सऊदी अरेबिया इज अगेन, ओके, इज अ प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड फर्दर राइट नाउ दे हैव साइंड द अब्राहम अकॉर्ड, ओके। सो अब्राहम अकॉर्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इसराइल एंड यूएई, ये हुआ है। एंड अदर अरब countries might also follow the UAE now. Okay, Bahrain has shown some interest in it. Okay, so this might go against with the Iran problem. Okay, now US is trying to resolve the Iran problem and they are looking for JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, okay, so that Iran nuclear deal can be realized, okay, or the problem is that in the ambit of, in the wake of Abraham Accord, it might be difficult, okay, सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है अभी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड हैज बीन मीडिएटेड बाय यूएस, वहां पे भी यूएस ने मीडिएट किया है, तो इट इज डिफिकल्ट। नाउ द आउटलुक फॉर इंडिया इफ यू सी, ओके, सो मिस्टर बिडेन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील, ओके, वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ही इज अ फर्म प्रोपोनेंट ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो इसको अच्छे से लेके आते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट चाइना, चाइना के ऊपर अगर आप बात करते हो, ओके, सो यूएस चाइना रिलेशन विल इम्प्रूव होगा एंड इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ओके, बिकॉज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लेस सपोर्टिव ऑफ इंडिया ऑन सेवरल इश्यूज। ऐसा हो सकता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया को सपोर्ट ना करे, ओके, इवन द इश्यूज लाइक कश्मीर और मुस्लिम माइनॉरिटीज के इशू को लेके, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, ओके, सो ये सारी बातें हैं। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स, ओके, और दे आर वर्किंग ऑन इट एंड इट माइट बी अपसेटिंग फॉर इंडिया, ओके, ये थोड़ा इंडिया के लिए अपसेट हो सकता है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स, ओके। सो मीनवाइल इफ यू लुक इनटू द इंडो पैसिफिक एरिया, ओके, इंडो पैसिफिक, दे आर सेइंग दैट दे आर वर्किंग फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ शिप्स, ओके, फ्री मूवमेंट ऑफ शिप्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, okay, so in that other than India they may consider Japan, South Korea and Taiwan as a better ally, okay, because they have more critical role to play। तो जापान, कोरिया और ताइवान का ज्यादा क्रिटिकल रोल है, ओके, बजाय कि इंडिया का इन द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडो पैसिफिक, ओके। सो दीज आर द इश्यूज विच आर प्रिवेलिंग, और इंडिया की सपोर्ट शायद वो ईस्टर्न लद्दाख के बात में ना करे। सो इफ यू टॉक अबाउट अफगान प्लान, ओके, इंडिया का स्टैंड पॉइंट वहां पे ये रहा है कि वी आर सपोर्टिंग द अफगान गवर्नमेंट, ओके, बस बट
Biden administration, they might move towards tilt towards तालिबान, ओके, और वो तालिबान के साथ थोड़ा ज़्यादा झुके इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना चाहते हैं. दे माइट फर्दर इंक्रीज द रोल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान का रोल शायद वो बढ़ा जाते हैं, यहाँ बढ़ाना चाहते हैं. अगेन इंडिया का कोई भी यहाँ पे रोल जो है इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है. So these are some problems, okay. So even in your Afghan problem, India will not be having any stake, okay. और यही जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने पे लगता है, ओके. सो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम. इट माइट अंडरमाइन द इंडियन इंटरेस्ट जो है डेफिनेटली अंडरमाइन होंगे, ओके. सो नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, लेट्स लुक इनटू दिस, ओके. सो इंडिया अप्रोच ओनली रीइंफोर्सेस द नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट, ओके. सो हमें जो है इंटरनेशनल एफर्ट को कोऑर्डिनेटेड वे में करना है और कोविड के साथ फाइट करना है, ओके. एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी इज अ हॉट टॉपिक. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन टू अलग डिफरेंट कंट्रीज, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके. एंड वी आर नॉट फॉलोइंग आवर सेल्फिश एजेंडा, हम लोग सेल्फिश नहीं है लाइक डेवलप्ड कंट्रीज, एंड वी आर शेयरिंग इट विद अदर कंट्रीज, ओके. सो इंडिया एंड चाइना डेफिनेटली दे आर रे ऑफ होप फॉर मोस्ट कंट्रीज, ओके. यही प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड स्पेशली इंडिया बिकॉज चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी को लेके डाउट्स हैव बीन रेज्ड, ओके. नाउ वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, एंड इफ यू टॉक अबाउट द एडवांस्ड कंट्रीज, ओके, एडवांस्ड कंट्रीज ने जो है ऑलरेडी सारे के सारे जो है ऑर्डर बुक कर दिए हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन वैक्सीनेटिंग देयर पॉपुलेशन, ओके. यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा वैक्सीनेट करेंगे, यूके भी ज़्यादा अच्छे से फास्ट वैक्सीनेट करेगा, ओके. सो इफ़ यू टॉक अबाउट 82% ऑफ पिफिजर प्रोडक्शन, ओके, वो ऑलरेडी बुक हो चुका है. 78% ऑफ मॉडर्ना का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी इन्होंने एडवांस कंट्रीज ने बुक कर लिया है वैक्सीन का, ओके. सो माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज कंट्रीज हु कांट अफोर्ड दिस वैक्सीन, ओके. सो वो अपने आप को अर्ली वैक्सीनेट करना चाहते हैं, एडवांस कंट्रीज, और डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे पीछे रह जाएंगे, ओके. सो देयर यू नीड अ ग्लोबल कोऑपरेशन, ओके. वहाँ पे आपको थोड़ा ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत थी. प्रियंका गुड मॉर्निंग, ओके. वहाँ पे डेफिनेटली आपको ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत थी, ओके. एंड इंडिया हैज डिस्प्लेड द एम्पैथी टू देयर नीड्स, ओके. इंडिया ने जो है एम्पैथी दिखाई है उनके नीड्स को लेके, एंड वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग डोजेज वैक्सीन टू कंट्री लाइक ब्राजील एंड इंडियन नेबर्स, ओके. इंडियन नेबर्स और बाकी लोगों को हम जो है प्रोवाइड कर ही रहे हैं, एंड डेवलपिंग वर्ल्ड को भी दे आर लुकिंग अप टू अस. अफ्रीकन कंट्रीज आर आल्सो लुकिंग अप टू अस, ओके. सो ब्राजील हैज रिसीव्ड 2 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन फ्रॉम इंडिया, ओके. एंड उसके बाद हमारे अभी भी वर्कर्स को वैक्सीन का फर्स्ट फेज ही चल रहा है, ओके. सो हमने सेल्फिश मोटिव ना दिखा के सबके साथ इसे शेयर किया है. सो इन अ डेमोक्रेसी इट कैन एक्सपेक्ट अ बैकलैश, ओके. लोग जो है नाराज हो सकते हैं. सो बट इंडिया ने जो है इसके ऊपर कमिटेड रहा है इंडिया, ओके. और ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर known as world's pharmacy, okay. So China has been an enthusiast in promising vaccine, okay, but Chinese vaccine के ऊपर जो है efficacy के ऊपर डाउट जो है वो दिखाया गया है सिनोवैक के ऊपर, okay. So Brazil and Nepal उन्होंने जो है डाउट बोला है, and now it's about India. Other than that you have to understand this thing. India definitely it will play a bigger role, okay. So if you want to realize the sustainable development goals, okay, जो कि already जो है थोड़ा पीछे हो गए होंगे. So sustainable goal number 3 is saying that ensure healthy lives and promote well-being for all, okay. So ये जरूर जो है थोड़ा undermine होगा यहाँ पे, okay, कोरोना की वजह से. So if you want to reach your sustainable goals, in that also this vaccination program is going to play an important role, okay. So the projection has shown that 6% of the global population would be in extreme poverty, okay, and which has gone up to 71 million. 7 करोड़ के आसपास लोग जो हैं extreme poverty में जाने वाले हैं, okay. According to estimates by International Monetary Fund, over 50% of the emerging markets or developing economies जो हैं, okay, they are converging towards advanced economies. अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो एडवांस्ड इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रही थी, अब जो है वो इससे डाइवर्ज हो जाएंगी. वो जो एडवांसमेंट का एक तरीके से टारगेट था वो उससे थोड़ा पीछे आ जाएंगी बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट, ओके. सो कोवैक्स एज अ पाथवे, ओके. सो अ ग्लोबल रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म फॉर पूल्ड प्रोक्योरमेंट और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो इट्स एन एम्बिशियस प्रोग्राम, ओके, बेस्ड ऑन फंडिंग फ्रॉम हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, उनसे जो है ये चल रहा है. एंड यूएस प्रेसिडेंट decision to join the project has now raised expectations significantly. यूएस भी आएगा यहाँ पे, ओके, एंड इससे जो है जरूर इसको बेनिफिट मिलेगा. सो इट्स अ ग्लोबल कोऑपरेशन, एफर्ट ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, जहाँ पे सब लोग साथ आके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट
okay, how you are moving towards enhanced global development, okay, and COVAX project can draw a new pathway for this, okay. So most of these vaccines are cost effective. Indian vaccine खासकर if you talk about $3 per dose, okay, this is the cost of Indian vaccine. So it's a remarkable thing that we are able to provide the vaccine at such a low price, okay. और हम लोग जो है लो प्राइस पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड South Africa, okay, they are interested in Indian vaccine, okay. And other than that, we have the ability to produce large volume of vaccine at an affordable cost, okay. It underlines the India's importance to developing countries. तो इसीलिए इंडिया इंपॉर्टेंट है वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि वी आर एबल टू प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन, ओके. सो ये आपको समझना है कि कैसे जो है दिस इज अ कोऑपरेशन बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ, ओके. सो नॉर्थ और साउथ के कंट्रीज के बीच में जो है ये एक तरीके का कोऑपरेशन है, ओके. सो बट देर इज अ थ्रेट इज ऑफ इंक्रीजिंग नेशनलिस्ट टेंडेंसी, ओके. सो नेशनलिस्ट टेंडेंसी को हमें रोकना पड़ेगा, उसको जो है हमें थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा. सो टुवर्ड्स द सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके, द इकोनॉमिक मॉडल ऑफ टुडे मस्ट बी रीइमेजिन्ड टू टेक इनटू अकाउंट बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम, ओके. So it has made us realize that we are part of the nature and emphasize the urgent need to protect the ecological function of biosphere, okay. ये सब हमको करना है कि we are not different from this nature, we are part of this nature, ये आपको समझना चाहिए. And how vital the health of planet is, okay. हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हमारी वेलबींग के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें, ओके. सो ग्लोबली जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 2.4 to 8% के अराउंड जो है कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट्स दैट ग्लोबल कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद पेंडेमिक could be from 8 ट्रिलियन to 15 ट्रिलियन. इतना जो है लोगों को नुकसान होगा, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होने वाला है, ओके. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस पेंडेमिक को रोकने की जो कॉस्ट है दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 22 बिलियन to 30 बिलियन अ ईयर, ओके. उतनी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि कॉस्ट आने वाली है. So we have to recognize that there would not be an economy without the natural environment. ये realization होना चाहिए, okay. इकोनॉमिक नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आप जो है इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते, okay. There is a strong correlation between human density, richness of biodiversity, okay. और इंडिया जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, क्यों? क्योंकि हमारी जो है ह्यूमन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, ओके. तो इंडिया जो है इज अमंग द हॉट स्पॉट, और जूनोटिक एमर्जिंग और री एमर्जिंग जो इन्फेक्शन होते हैं वो इंडिया के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, ओके. तो ये आपको समझना पड़ेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ओके, स्टेट्स दैट एनवायरमेंट रिस्क कंटिन्यूज टू थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी. एनवायरमेंट रिस्क जो है वो हमेशा जो है ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक थ्रेट है, ओके. सो टॉप 5 रिस्क आर एक्सट्रीम वेदर एक रिस्क है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर एक रिस्क है, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज इज अनदर रिस्क, ओके. सो इन्फेक्शियस डिजीज आ जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा अगर हम अपनी हरकतों को नहीं सुधारेंगे, ओके. सो इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो टॉप लिस्ट पे है, और कोरोना ने दिखा दिया है कि कैसे जो है इन्फेक्शियस डिजीज नुकसान कर सकती हैं. सो जाइका वायरस, नीपा वायरस, कोरोना वायरस, सब लोग जो हैं वो जू से हमारे यहाँ आ रहे हैं, ओके. सो इन चीज़ों को हमें रोकना है. द टॉप 2 रिस्क रिस्पॉन्स ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो हमारे हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी आपको रोकना है. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इफ यू टॉक, ओके, शुड नो लॉन्गर बी जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो आपको डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद करना पड़ेगा, ओके. सो ये रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन जो हो रही है इसको रोकना पड़ेगा माइनिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, ओके. और कंटिन्यूसली आपको खुद को जो एग्रीकल्चर को आप एक्सपेंड कर रहे हो, ओके, उसको भी रोकना पड़ेगा. सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी डन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ओके. ये थोड़ा कंट्रोल में लेके आनी पड़ेंगी, अदरवाइज थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड और आपको जो है नुकसान होगा, ओके. सो पेंडेमिक रिस्क जो है वो बढ़ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो उसको थोड़ा सस्टेनेबल वे में करना चाहिए, ओके. सो देयर इज अ स्टडी बाय स्विस री इंस्टीट्यूट जो पब्लिश हुई थी. इट फाउंड दैट ग्लोबली 20% ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव अ फ्रेजाइल इकोसिस्टम. उनका इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है. एंड 55% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है इट डिपेंड्स अपॉन हाई फंक्शनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, okay. 55% of your GDP depends upon the good biodiversity. So it is evident that the policymakers should factor in biodiversity and ecosystem into your economic decision making, okay. तो जो policy makers हैं अब उनको ये चाहिए कि वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माने, ओके, अपने डिसीजंस के अंदर, अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर. एंड दिस विल एक्सेलरेट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी टू सस्टेनेबल, इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड जस्ट डेवलपमेंट मॉडल, ओके. तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हो, आपकी पॉलिसी का वो पार्ट होती है, देन
आप जो है सस्टेनेबल, इक्विटेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल की तरफ बढ़ते हो. ओके, सो वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स नीड टू कम अप विद अ फॉर्म ऑफ नेशनल अकाउंटिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी मॉडल. ओके, नाउ अब आपको जो है जीडीपी मॉडल से थोड़ा हटके आगे बढ़ना पड़ेगा. ओके, एंड योर अकाउंटिंग सिस्टम शुड इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी एज अ फैक्टर. ओके, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपकी कैलकुलेशन का पार्ट होने चाहिए. ओके, सो इट इज सजेस्टिंग अ न्यू मॉडल. ओके, ये बोल रहे हैं कि बजट नीड्स टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द सब्सिडीज इन एक्टिविटीज दैट विल फर्दर डिग्रेड आवर नेचुरल हैबिटेट. ओके, जो कि फर्दर आपके नेचुरल हैबिटेट को डिग्रेड करें. तो यहाँ पे थोड़ा फार्म सब्सिडीज की बात आ गई. ओके, उनको थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ओके, दैट लेड टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर. ओके, a national mission on biodiversity and human well-being has been approved by prime ministers. Okay, science technology innovation advisory council ने ये national mission on biodiversity जो है एक अप्रूव किया है, and the objective of that is to restore and enhance the biodiversity. Okay, and that is possible by working on sustainable development. So we have to strengthen the sustainable use, generate thousands of green jobs you can create. Okay, and you can encourage the Indian public to appreciate the natural and associated cultural treasures. Okay, जो natural world है उसको आपको एक तरीके से प्रमोट करना है. तो ये बात इन्होंने कही है. नाउ एज आई शो यू, दिस इज योर मेंस 2019 क्वेश्चन एंड दिस इज योर मेंस 2020 क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स की बात की है. ठीक है ना, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट. ओके, हियर ऑल्सो इन 2020 टॉकिंग अबाउट द ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स. ओके, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होता है उसको रोकने के लिए ये सवाल बनाया है. सो इट मीन्स दैट बॉर्डर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, border security is important for you and this editorial is related to it. So they are saying that we should have a virtual surveillance system, okay, to secure its boundaries. Now virtual surveillance system क्या आएगा? With the help of ICT, radars, टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, उसका आप यूज करके जो है अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाते हो. अदर देन दैट आई वुड लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू. ओके, सो एज आई टोल्ड यू देयर वाज वन essay, okay, in your 2019 which was based on this border security issue. Okay, other than that you should know there is a committee called Madhukar Gupta committee. Okay, Madhukar Gupta committee, you have to remember this name. This committee is also based on your border management. ये भी आपके border management पे ही है and you have to remember this. Okay, so these are few factual things which are important. Now what they are saying, okay, so US president Joe Biden, उन्होंने जो है construction of wall बन रही थी वहाँ पे. Okay, US और Mexico के border पे, they have stopped it. Okay, Trump administration started it. Now you have to understand this thing. There are smart ways for your surveillance, for your border management and armed patrolling if you talk about. So these smart ways should be used. Okay, so this is important for your border security. The smart ways using the technology is important for your border security and US is doing it. We should also include it. Now when you talk about this smart wall, ये smart wall में क्या आप include करोगे? It is basically using the sensors, radars, the surveillance technology to detect and track the border break-ins. Okay, जो भी border अगर आपका टूटा हुआ होता है वहां पे जो है आप जो है इनको देख सकते हो. Now how it is useful in India-Pakistan border? Okay, you must have heard in news 2-3 days back there was one news related to that tunnel has been found. Okay, tunnel has been found. Now such kind of things can be detected with the help of technology. Okay, so the technology is definitely capable of performing most difficult tasks which is related to your border security. आप definitely with the help of technology कर सकते हो. Now if you see the nature of India Bangladesh border, okay, if you see the nature of India Bangladesh border, what is the problem there? What is the problem in India Bangladesh border? वहाँ पे problem क्या है? Okay, one is the forest, dense forest, they are there, forest dense है. Another is riverine border. Okay, so that is your riverine border. वो आपका riverine border है. There are thousands of streams which are entering India, so that's why it is again very difficult. Okay, so mainly इसको manage करना difficult है. You need technological solution. आपको technological solution चाहिए. Otherwise you won't be able to stop the trafficking. Okay, trafficking आप जो है उसको रोक ही नहीं सकते हो. So ये सारी चीजें इन्होंने समझाई हैं. So other than that, it is not a new concept. Okay, so
टेक्नोलॉजी फर्म्स वर सॉट टू हायर्ड बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इस जो मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बना रहे थे, सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दे हायर्ड टेक्नोलॉजी फर्म, आईटी फर्म्स वर हायर्ड, ओके, सो इट वाज स्टेटेड दैट हंड्रेड्स ऑफ मोबाइल सर्विलेंस टावर्स विल बी डिप्लॉयड, मोबाइल सर्विलेंस के टावर्स वहां पे लगेंगे, ओके, सो एक वर्चुअल वॉल बनाने की बात थी कि कैसे आप रडार सैटेलाइट से, कंप्यूटर इक्विप्ड बॉर्डर कंट्रोल व्हीकल्स से, ओके, कंट्रोल सेंसर्स थे, अंडरग्राउंड सेंसर्स की हेल्प से एक जो है आप वर्चुअल वॉल बनाते हो, तो इससे जो है आप सर्विलेंस को करोगे, ओके, और कैमरा, थर्मल इमेजिंग, यू आर गोइंग टू यूज दीज टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, so system has been such advanced that it is capable of distinguishing between animals, humans and vehicles, okay, उन सबको ये एक तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा, सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट नाउ अराइजेस इज वेदर सच अ प्रोजेक्ट कैन बी अंडरटेकन टू सिक्योर इंडियन बॉर्डर्स, क्या हम अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर कर सकते हैं? The problem is that India has been struggling with problem of terrorism, smuggling, infiltrators, सब कुछ हम problem face कर रहे हैं, okay? So definitely you have to curb the cross border infiltration, आपकी national security के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, so that's why it's a high time that we should start using technology, okay? और आपकी जो BSF है, you have to equip them, border security force को equip करना पड़ेगा, okay? There are other benefits also, so the critical factor that must be considered to enable the usage of such system along Indian borders, okay, वो है कि हमारा region, the terrain is very rugged, as I told you, forest terrain is there, riverine terrain is there, okay, so it is difficult to have a physical wall बनाना difficult है, that's why we can use the virtual wall को आप बना सकते हो. Now what is this virtual wall? ये आपकी जो है IT enabled, sensors enabled wall hai, okay, so the smart wall however makes use of systems that would be designed in such a way that they can operate even in rugged areas, okay, the difficult terrain hai wahan pe bhi ye kaam kar sakenge. So Munna bhaiya morning, okay, so imperatively in US various other benefits such as cost effectiveness, less damage to the environment, fewer land seizures, okay, speedier deployment are being noted that give the smart wall concept an edge over the traditional physical war, okay, so things have been observed कि ये थोड़ा ज़्यादा cost effective है, environment को damage नहीं करेगा, okay, because if you are going to construct a physical wall उसको जो है definitely वो कुछ space भी लेगा, environment को भी damage करेगा, okay, resource will be used, तो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ बेनिफिट हैं जो हम लेके आ सकते हैं. सो ये जो स्मार्ट वॉल बनेगी ये स्पीडियर डिप्लॉयमेंट हो सकेगा, ओके. नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन, आपका म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है या म्यांमार इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पे आप दीवार बनाओगे कैसे? फिजिकल वॉल, ओके. सो such a system even if not feasible for our long boundaries may still be deployed to enhance critical security establishment or our country, okay. इसीलिए जो है ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा फिजिकल फेंसिंग और वॉल्स उसको ये और अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा, ओके. सो इसको डेफिनेटली हमें डिप्लॉय करना चाहिए, ओके. सो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ पठानकोट अटैक हुआ था, ओके, एंड इफ वी हैड सच अ स्मार्ट वॉल तो चीजें इजीली आप पहले ही डिटेक्ट कर लोगे, ओके. सो इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू वेल इक्विप्ड एंड साइमल्टेनियसली हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ओवर इट्स एनिमीज, ओके. आपको अपने एनिमीज के ओवर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज तो लेके आनी पड़ेगी, एंड एक्सपर्ट्स मस्ट एक्सप्लोर दिस आइडिया टू इफेक्टिवली काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, okay. So it is unfathomable to deploy a security system that club technology with traditional setups, okay, due to terrain and other problematic factors. So this is the question for digital India to answer, okay. क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपनी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए फिजिकल वॉल भी लगाएं और साथ साथ जो है आप ये स्मार्ट वॉल भी लगाओ? But I would like to share one thing. If you want to conclude your answer, okay, on this border management, so the answer lies in this, that people are the first line of defense, okay. People are the first line of defense, okay. People are the first line of defense. It was stated by National Security Advisor अजीत डोवाल, ओके. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने जो है ये एक सेमिनार में ये बोला था कि पीपल आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. सो इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, अगर आप बॉर्डर मैनेजमेंट भी कर रहे हो, ओके, देयर
द रोल शुड बी देयर फॉर पीपल। बॉर्डर मैनेजमेंट में भी लोकल कम्युनिटी का रोल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओके, लोकल कम्युनिटी अगर आपके साथ नहीं है, आप बॉर्डर को मैनेज नहीं कर सकते हो। तो ये आपको समझना है। ओके, सो बी इट इंसर्जेंसी और एनी अदर प्रॉब्लम, तो यू हैव टू गेट अलोंग पीपल विद यू। आपको लोगों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। यू हैव टू विन देयर हार्ट्स। ओके, यू हैव टू विन देयर हार्ट्स, उनके हार्ट्स आपको जीतने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रोवाइड देम लाइफ, क्वालिटी लाइफ, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्रोवाइड देम हेल्थ फैसिलिटी, यू हैव टू प्रोवाइड देम एजुकेशन। ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू विन देयर हार्ट्स। और एक बार आप उनके दिल जीत जाओगे, फिर जो है वो आपको खुल के सपोर्ट करेंगे, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को खुल के सपोर्ट करेंगे, एंड जो है आपको बॉर्डर मैनेजमेंट जैसी प्रॉब्लम जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 3 बार से क्वेश्चन जो है इस पे लगातार आ रहा है। तो आपको जो है ये थोड़ा कवर करना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू मीट टुमारो अगेन। ओके, सो कल हम दोबारा मिलेंगे इस टाइम पे। 9 AM is the time, okay, for the Hindu analysis. So stay connected up with us. Okay, the Hindu analysis के साथ 9 AM आपका टाइम होता है। So stay connected with us. Okay, tomorrow we are